Good evening to all of students. Today we discussed about basic fundamental of mycology. Previous classes we discussed about basic plant pathology, basic fundamentals of plant pathology. So today I deliver lecture on basic fundamental of mycology. We know that father of mycology is a P.A. Michaeli because of first scientist he was see the fungal on melon first fungi. Mycology is a Greek word. It is the science which deal with the study of fungi. Mycology means it also mushroom. Mycus logus. Mycus means mushroom as well as fungi because of mushroom is a part of fungi or fungi. Logos, we know very well that logos means discuss, yeah, study. So that's why mycology is the study of mushroom or fungi. Term fungus. What is fungi? What is fungus? Fungi is a plural and fungus is a singular. Fungus. What is fungus? Second term fungus. Fungus is derived from a Latin word, fungor. Many competitive exams asked that fungus is which word, like Greek word, Latin word, etc. So, fungus is a Latin word, fungor, meaning to flourish, yani flourish. Study of fungi start with study of mushroom because of their macroscopic size and brilliant color. So that's why flourish because of mushroom size and brilliant color, having macroscopic size and brilliant colors. Importance of plant pathogens we discussed in earlier class, so I take some time for describe importance of plant pathogen, like that plant disease caused by microorganism. We know that very well. High losses and indirectly or directly losses to human because they damage plants. Fungi or plant pathogen directly damage plant and plant product on which human depend for food, clothing, furniture and housing. All material, all things we receive from plants. We know very well. All things derive plants. So destroy plants by plant pathogen. So directly, indirectly, human affected. Second one, millions of people all over the world still depend on their own plant produce for their survival. Like that, stable food, we talk about rice is West Bengal stable food. Millions of people depend only stable food like Europe, Irish famine, because of mostly millions people total depend stable food. If we talk about Rajasthani peoples totally depend on wheat because of wheat is a stable food. Third one, plant disease reduce the quality and quantity of plant produce. It is very important, and we know all because of quality and quantity. How? Deteriorate the quality of fruits, like that apple scale.
black tip of mango. We will, if we go on market, we seeing that quality deteriorate. क्या हम उस फ्रूट को खरीदेंगे? नहीं. Scab means outgrowth, patches, citrus canker. हमें कैसा फ्रूट चाहिए, कैसी सब्जियां चाहिए? फ्रेश, हेल्दी, ग्रीन. So reduce the quality and quantity of plant produced, like that wheat bunt caused by Tillandsia species. Wheat bunt, partially burnt. One side healthy seed, one side partially burnt. यानी एक तरफ तो बिल्कुल हेल्दी गेहूं के दाने हो और एक तरफ आधे काले, यानी ब्लैक portion, half part is blackish, black mycelium powder, black masses of. So we buy, हम कौन से खरीदेंगे? Healthy wheat. Result in increased price of product to consumers. Result in severe pathological effect on human and animal that eat plant product. Today we suffer many diseases like that: silent attack, cancer, and many diseases due to highly uses of fungicides, insecticides, weedicides, pesticides on plants. And human animals totally depend on plants. So directly indirectly वो कहाँ जा रहा है? Humans के अंदर. Residual effect, health hazardous, destroy beauty of environment by damaging plant around home, park, street and forest. Next, the pesticide used to control disease, pollute and water and environment. We know very well that highly hazardous uses of pesticide we use because of disease control. So side effects: pollute the water, air, environment, soil, destroying. Reduce crop yield, बिल्कुल. Even 50 to 90% reduce crop yield due to diseases. Causes financial losses. कैसे? आप मार्केट जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितने की आती है एक बार पता करके आइएगा. कितनी सारी फंजीसाइड्स, कितने केमिकल्स यूज करता है और वो कितने कॉस्टली होते हैं. प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, लेबर्स. ओके. चेंज एग्रीकल्चर पैटर्न. पहले आईटी के यूज होता था, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज. आजकल कुछ नहीं, कुछ दिखा डिजीज है, लाओ फंजीसाइड. तो एग्रीकल्चर पैटर्न ही चेंज हो गया. एंड इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रीज, lack of raw material because destroyed by fungi. Some plant disease even change food habits of human population. बिल्कुल. Like that, coffee rust. Most of people depend on coffee, but whenever came rust disease in coffee, then people automatically change self habit, replace coffee to tea. Okay. Examples of serious disease that lead to famines. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डिजीज का कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल है. लाइक दैट आयरस फेमाइन, यानी फेमाइन का मतलब जानते हैं? अकाल, महामारी. 1845, प्लीज बी concentrate. Most of competitive exams ask these questions. Iris famine whenever come. 1845, late blight of potato by Phytophthora infestans destroy million hectare of potato fields. Thus, people switched over to other food crops. I told earlier that due to late blight of potato, millions people death due to
Phytophthora infestans, and millions people switched over to other food crop. उन्होंने दूसरी क्रॉप एज ए फूड क्रॉप के लिए चूज की. बंगाल फेमाइन is come bipolaris oryzae in rice 1942. It is very important. West Bengal, coffee rust, Hamelia vestatrix, Sri Lanka 1868. Wheat rust, Puccinia graminis formis species triticii, black rust of wheat 1940 USA. Southern corn leaf blight, Helminthosporium meadis. It is a very important due to T cytoplasmic sterility. Important phytopathogenic organism like that fungi, bacteria, fastidious vascular bacteria, molecules, virus, viroids, algae, and flagellant protozoa. Fungi, because we only discuss about fungi, mycology, in which study of fungi. Fungi are eukaryotic, spore-bearing, achlorophyllous heterotrophic organism. How? Eukaryotic means possess membrane-bound organelles, while in case of prokaryote, absent of these bound organelles like Golgi body, mitochondria, and most of, okay? That generally reproduce sexually and asexually and whose filamentous branched somatic structures are typically surrounded by cell wall containing chitin or cellulose or both. Eukaryotic means well-developed nucleus. Spore-bearing, sporangiospore, zoospore, etc. Achlorophyllous heterotrophic organism means lack of chlorophyll. Heterotrophic means totally depend another organism. जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना सकता. हेट्रोट्रॉफिक यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, नॉट ऑटोट्रॉफिक. That generally reproduce sexually and asexually and filamentous branched somatic structure, cell wall containing chitin in higher fungi like Ascomycota, Basidiomycota, cellulose in lower fungi like this. अभी मुझे किसी ने मैसेज किया है कि बंगाल फेमाइन मैम हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से आया. हेलमिंथोस्पोरियम और बाइपोलरिस एक ही बात है. रिसेंटली हेलमिंथोस्पोरियम इज नोन एज बाइपोलरिस ओराइजी. They can exist both as unicellular and multicellular. Unicellular means yeast, like single cell. Multicellular, most of fungi. Most fungi grow as tabular filamentous hyphae. Hyphae means we discussed further. Next slide. A connected mass of hyphae is called mycelium. Protoplasm of hyphae is surrounded by rigid wall. प्रोटोप्लाज्म होगा हाइफा का, वो किससे? रिजिड सेल वॉल से सराउंडेड होगा. एंड बाय काइटिन. द फंगल सेल वॉल कंटेन एर्गोस्ट्रोल रादर देन कोलेस्ट्रॉल. फंगल सेल वॉल कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? इंटीग्रिटी बढ़ाता है, डाइजेस्ट करता है फूड को. वैसे ही एर्गोस्ट्रोल इज वेरी नेसेसरी इन फंगल सेल वॉल. Fungi produce a unique form of tubulin in connection with nuclear division. Fungi have a small nuclei with very little repetitive DNA. All are achlorophyllous because never autotroph because they don't have chlorophyll or chloroplast. So don't prepare, don't made food itself. May be free living or in intimate relationships.
like that, free living or symbiotic association like that, lichen, mycorrhiza. Fungi reproduce sexually and asexually. Organic compound like glycogen, sugar, alcohol, and lipid. Somatic structures. Thallus. Entire body of fungus is called thallus. यानी जो उसकी body है उसको क्या कहेंगे? Thallus. Mass of hypa. Vegetative somatic thallus gives rise to reproductive structure from which spore or produce either sexual or sexually. Holocarpic or eucarpic. Further divided thallus, holocarpic and eucarpic. Holocarpic means whole thallus यानी totally पूरा जो thallus है उसका वो convert हो जाए into one or more reproductive structure. Means whole thallus is converted into one or more reproductive structure, like that example Syncytium and Olpidium. यानी इसका टोटल थैलस ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट में बच जाए. While in case eucarpic, only a portion, not whole part, only a portion of thallus become reproductive and other as a vegetative part. I think clear this is. Holocarpic means totally thallus is converted into one or more reproductive structure, while in case eucarpic, only a portion of thallus become reproductive and another portion is very vegetative phase. In case example Omycota, Ascomycota and Basidiomycota. माइसीलियम क्या है? अब हमारे माइंड में है कि ये क्या हाइपा माइसीलियम. काफी बच्चे शायद हाइपा और माइसीलियम में कंफ्यूज रहते हैं, या व्हाट इज हाइपा माइसीलियम है क्या चीज? फिलामेंटस वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम. सिंगल थ्रेड ऑफ हाइपी. हाइपा क्या होता है? इससे पहले सिंगल थ्रेड यानी एक धागा नहीं होता उस तरह का धागा, लाइक हाइपा होता है. जो हाइपा का मास होता है यानी एग्रीगेशन नेटवर्क ऑफ हाइपा इज कॉल्ड माइसीलियम. माइसीलियम हाईलाइन भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है. हाईलाइन मीन्स कलरलेस, मे बी कलर्ड ड्यू टू presence of pigment in cell wall. The mycelium may be ectophytic or endophytic. Ectophytic and endophytic means ectophytic fungus. What is if the fungal thallus is present on the surface of the host plant, यानी अपर सरफेस पे, यानी फंगल थैलस होस्ट प्लांट के सरफेस पे रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टोफाइटिक. एग्जाम्पल पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज. एक्टोफाइटिक फंगस है. मेनी टाइम क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम्स. whose fungus, which fungus ectophytic, which fungus is ectophytic. So powdery mildew fungus is ectophytic fungus. एंडोफाइटिक नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है. एक्टो यानी आउटर सरफेस. अभी तो ले लो जी. एंडोफाइटिक फंगस if the fungus penetrate into the host cell, यानी एंडो का मतलब इनसाइड, होस्ट सेल के इनसाइड, present inside the host, it is called endophytic. Example Vaccinia endophytic fungus may be intercellular or intracellular. Many times I describe what is inter and intra. Again I repeat, intercellular means hypa grow in between the cells, between two cells. Intra, hypa penetrate into host cell, within cell. Example Astilago vascular xylem vessels, Fusarium oxysporum is an endophytic fungus. Hypa, I told earlier, hypa individual branch of mycelium which are generally uniform in thickness, usually about 2 to 10 micrometer in diameter. The hypae may be septate or aseptate.
What is hypa? Single thread and aggregation of hypa. बहुत सारे hypa मिला के mycelium बनाते हैं. Like that. This is a mycelium. जो तंतु दिख रहे हैं उनको बहुत सारे धागे जैसे, ये हाइपा है, सिंगल हाइपा. बहुत सारे हाइपा मिलकर माइसीलियम बनाते हैं. यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. दिस इज ए माइसीलियम, एग्रीगेशन ऑफ हाइपा. So hypa may be septate or aseptate. Synocytic hypa means aseptate hyphae. The aseptate or non-septate hyphae having the nuclei scattered in the cytoplasm because of no cross wall, no septation. Like that, this is a synocytic hypa. It is a very clear nuclei scattered anywhere. Okay. Then septate hyphae and very important, synocytic hypa किसमें होता है? Oomycota group. Aseptate hypa, Oomycota group. Septate hyphae, the hypa have a septa having perforation through which cytoplasmic strand containing nuclei can migrate from one cell to other. Presence of septa. Like that, this is a septa. The cross of what is septa? Septa means cross wall which divide the hypa into cell are called septa. Divide two parts. Most are complex type septa, like that Dolichopore septa. It is a complex septa. It is a complex type septa with barrel shaped central pore and hemispherical cap is called parenthosome pore cap. We described earlier Dolichopore septa. What is? Dolichopore septa is a typical character of Basidiomycota. And complex type septa barrel shape के होंगे. Most competitive exam asked में Dolichopore septa किसमें होते हैं? Basidiomycota में. पैरेंथोसोम यानी उसके दोनों तरफ क्या होती है? पोर कैप. Like that, this is a Dolichopore septa. Dolichopore septa in which this is parenthosome Dolichopore septa, outer cover in which, and this is a barrel shaped septa and parenthosome, this is out cover, outer membrane. Border pit septum, this is a pore septum. Perforated septa belong to Deuteromycota. This is Ascomycota, Voronin body, septal pore, solid septa, another group. Dolichopore septum is formed Agricomycotina, certain Basidiomycetes. Fungal cell structure. Fungal cell wall is made up of chitin and glucans. Please be concentrate. मेरे टाइम ARO के क्वेश्चन में पूछा गया था फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन प्लस ग्लूकन्स. Wherever Oomycota means pseudofungi, cell wall is made up of cellulose. Oomycota में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की. Zygomycota, in which Zygomycota cell wall made up of chitosan chitin. It is very important. Many times question asked in many competition exam. Zygomycota में chitosan chitin की होती है, Oomycota में cellulose की होती है. Fungal cell wall fungi में, true fungi में chitin plus glucans की होती है, glucan. Spatial somatic structure, Aprisorium, Haustorium, Rhizoids. Aprisorium, we know very well what is Aprisorium. It is the anchoring organ, attachment organ of fungi. We discuss further slide. Next, Haustorium, absorbing organ, nutrient absorbed from host. Rhizoid, short root-like filamentous outgrowth, joined by of nuclei, rhizopus. This is a rhizoids. A rhizoids. Rhiza means root. Oids means like.
You have clear seen this picture. This is a root like. This is rhizoids. This is rhizopus fungi. अभी बहुत सुन रहे हो ना म्यूकर और राइजोपस. म्यूकर फंजाई ब्लैक फंगस घोषित किया इसे. म्यूकर और राइजोपस दोनों बिलोंग करती है जाइगोमाइकोटा ग्रुप से. म्यूकर और राइजोपस में मेनली डिफरेंस यही है कि इसमें राइजोइड्स होते हैं जबकि म्यूकर में राइजोइड्स नहीं होते हैं. Short root-like filamentous outgrowth of the thallus generally formed in tuft यानी गुच्छों में होते हैं at the base of small unicellular thalli or small prophores. अब rhizoid से क्या काम है? What is function? Rhizoid serve as anchoring or attachment organ to the substratum and also as an organ of absorption nutrient from substratum. अटैचमेंट का और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का काम है इसका. राइजोइड्स आर शॉर्ट delicate filamentous that contain protoplasm but not nuclei. It is very important. Common in lower fungi like Chytidiomycota, Oomycota and Zygomycota. Aprisorium to press against. Aprisorium means press against. Latin word है. It is a aprisorium. Exam tube, aprisorium, infection pag, and then further formation of Hosteria. Is a simple lobed structure of hypa or germ tube. Hypa का ही part है ये. Pressing organ from which a minute infection pag usually grow and enter the epidermal cell of the host. यानी ये क्या करता है? होस्ट को प्रेशर करता है. हाइपी का ही पार्ट है. एप्रिसोरिया फॉर्मेशन होता है, प्रेस करता है होस्ट को. अटैचमेंट में काम आता है ये मेनली और इन्फेक्शन पैक से पेनिट्रेट करके एंटर करता है. इट हेल्प्स जर्म ट्यूब टू अटैच to host cell of the host or substrate, Hosteria. It is a typical diagram of Hosteria. Hostorium, Latin word. Hoster means drinker. Are special hyphal structure or outgrowth of somatic hyphae sent into the cell to absorb nutrient. हम बात करें एप्रिसोरिया क्या काम था? एंटर करने का, अटैचमेंट होस्ट से और एंटर करने का. जबकि होस्टेरिया क्या काम है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. ओके. हाइपल वॉल्स है. हाइपल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां से सेल वॉल से मॉडिफिकेशन हुआ. मॉडिफिकेशन होके क्या बना? होस्टेरियम. होस्टेरिया मे बी नोब लाइक और बैलून लाइक इन शेप. इफ वी टॉक अबाउट व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इन विच नोब लाइक होस्टेरिया. इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, मिनिएचर रूट सिस्टम भी हो सकते हैं. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, होस्टेरिया मोस्ट ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट में ही बनेंगे. ऑब्लिगेट पैथोजन लाइक दैट रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू. द हाइपा ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट लाइक डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट फंजाई, लेड ब्लाइट फंगस प्रोड्यूस होस्टेरिया. हाइपोपोडिया मीन्स hypa foot-like is a small appendage with 1 or 2 cells in length. Function as a absorbing structure. Hyphal modification. कई बार हाइपा मॉडिफाई हो जाता है और कौन से स्ट्रक्चर बन जाते हैं? Mycelium of higher fungi is organized into loose or compact woven tissues. यानी जाल की तरह बुने हुए होते हैं, या तो लूज होते हैं या फिर कॉम्पैक्ट यानी बहुत सघन होते हैं. उन्हें हम प्लैंक टेंकाइमा बोलते हैं. प्लैंक टेंकाइमा देयर आर 2 टाइप, प्रोसेंकाइमा, सूडोपेरेंकाइमा. प्रोसेंकाइमा और सूडोपेरेंकाइमा में क्या डिफरेंस है? प्रोसेंकाइमा कैसे होंगे? लूजली होंगे, बहुत लूज वोवन फंगल टिश्यूज इन विच द
Individual hyphae lie parallel to one another, like that, in which you clearly hypa parallel lie together, यानी एक साथ खड़े हैं और वर्टिकल कंडीशन में खड़े हैं, लूजली हैं. जबकि सूडोपेरेन्काइमा में कैसे हैं? कॉम्पैक्टली. ये लूजली है, ये कॉम्पैक्टली, यानी बहुत सघन है. आइसोमेट्रिक शेप में है, ओवल शेप में है, जबकि ये लॉन्गर शेप में है. Pseudoparenchyma, compactly woven fungal tissue with more or less isometric oval in shape, resembling parenchyma of higher plants. Example, rhizomorph of Armillaria, while prosenchyma, troma in Agaricus. Stromata, compact matter-like structure made up of parenchyma and pseudoparenchyma. Stromata means compact matter, बहुत ही सघन टाइप का, जिसमें सूडोपेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा फ्रूटिंग बॉडी बनती है, लाइक दैट एसरबुलाई. स्पोरोडोकिया, we discuss about further class in asexual reproduction, asexual fruiting body, in which acervuli, sporodekia, pycnidia we will discuss. Plasmodium, प्लाज्मोडियम नेक्ड मोटाइल होंगे, ये मल्टीन्यूक्लिएट होंगे. मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इन बिलोंग टू Nestigomycopna group Protestia, like that club root fungi. Rhizomorph, thick root like aggregate, also called mycelium cord. Rhizomorph, you have clear in this picture. Sclerotium, very important. It is hard and compact vegetative resting structure, resistant to unfavorable conditions. It is mostly made up of pseudoparenchymatous cells, like that compact mass of hyphae. Compact blackish mass of hyphae. It is a resting structure. Rhizoctonia, Sclerotinia, Claviceps, Sclerotium. Resting structure, survival in unfavorable conditions. So today I think too much, nothing, in which next class में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे हम. माइकोलॉजी क्या है, क्या एग्जांपल्स थे इसके, आयरिस फेमाइन कब आया, बंगाल फेमाइन कब आया, कॉफी रस, व्हीट रस, सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, फंजाई क्या है, टिपिकल कैरेक्टर्स क्या हैं इसके. दिस इज अ माइसीलियम. So I think is enough. Class is over.